Suprabhatam to everyone. I hope you are studying every day early morning because that is a great time to study. And so morning में मिले हैं तो let us all do some description, a song describing morning. Prabhata Varnanam. प्रिय छात्राः नमस्ते, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। सो व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग? चंद्र अस्तं गच्छति, सूर्य उदयं गच्छति, परितो भवति प्रकाशः, मंदं चलति समीरः, मधुपो भवति सधीरः, प्रभात वर्णनम एतत्. We always associate morning with the moment of sun and moon. So according to us, where we are, we see Chandrah kim karoti? Astam gacchati. Moon is going down, moon is setting, and sun is rising. Paritah meaning charo taraf. At all sides, there is prakashah bhavati. Light is spreading. Light is slowly and slowly coming, and everywhere there is light. Mandam chalati samirah. No, Samir is not a name of any boy in your classroom. Samirah means vayuhu. हवा कैसे चलती है? Mandam. Slowly. So wind is moving slowly. Madhupah bhavati sadhiraha. Madhupah, madhu pibati iti madhupah. Every flower has some nectar. वो nectar को कौन पीता है? Honeybee. So now honeybee का काम सुबह में शुरू हो जाता है. So madhupah is ready very patiently. sadhiraha, धीरज के साथ रेडी है आज का काम शुरू करने के लिए. मधुपः सधीरः भवति. Now the honeybee is becoming patient. ब्रैकेट में to start the work of collecting nectar from all the flowers. और क्या क्या होता है सुबह में? कलिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम विलसति, निद्रा तंद्रा भग्ना, जनता कर्मणि लग्ना, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः, एतत् प्रभात वर्णनम. Kalika and Latika both sound the same, isn't it? And Vrundam means samuha. So when we say Kalika Vrundam is a bird. जो flower bloom होता है उससे पहले से छोटी कली होती है, that is called Kalika, a bird. B-U-D. So birds, all the birds, the group of all the birds are blossoming. Latika Vrundam. So Latika or the creepers, Latae. So what are Lata doing? They are also shining, blossoming, because with the Surya Kiran, everything is shining back. Nidra and Tantra both. Bhagna. जैसे आप सोए हुए हो और मम्मा को उठाना हो, सुबह जल्दी उठो स्कूल है, तो what will mama do? Just open up the curtains. जैसे ही प्रकाश आता है, we are like, oh, अब नींद टूट गई. तो क्या टूटा? What is broken? Our sleep breaks. And even tantra meaning आलस्य, कि जितनी भी laziness है वो सब सुबह के समय हट जाती है. And all of us are like the first stanza, madhupah, honeybee. हमारे सबकी भी एक इच्छा होती है, जो भी हमें आज काम करना है, wow, what a fresh day. Let us all have that same enthusiasm as the honeybee. कि आज मुझे कुछ काम करना है, आज कुछ अच्छा करना है, आज किसी की मदद करनी है, आज मेरे गोल के प्रति मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाना है. So all that happens in the morning. न कि रात को लेट जाग के, जो बहुत लोग करते थे. जब मैं आपकी जितनी थी, मैंने भी लेट नाइट स्टडीज बहुत की है. बट एज आई ग्रू, आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ब्रह्म मुहूर्त. कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आइडियाज हमें स्ट्राइक करती है वो रात को लेट नाइट नहीं करती है. ओके,
So if you are a sleepy owl, just wake up early and do this for 21 days. You will see the magic yourself. Next is Janata. Janta, Janardan. Suna hoga. Janta means the people. People are lagna. In what thing? Karmani lagna. All the people are engrossed, involved in their own work. Sakale Nava Ullasaha. Sakal means all. Sakale, in everybody there is a fresh enthusiasm, new enthusiasm. Vadane Vadane. Vadan is mukha. Mukhe Mukhe hasaha. Each and everyone is smiling. थके नहीं है, लाइक फ्रेश शुरुआत है. जैसे हमारे लाइफ की फ्रेश शुरुआत कब होती है? जब हम छोटे थे. छोटे बच्चे कितने अच्छे से, निखालस से, इनोसेंटली हंसते हैं. वैसे ही हम वापस बॉर्न तो नहीं हो सकते, बट हाँ, हमें नया जीवन एवरी मॉर्निंग मिलता है. सो वदने वदने हासः. मुख मुख पे हास्य होता है, स्माइल होती है. फिर मॉर्निंग जैसे जैसे 1-2 घंटे होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? Everybody is waking up, somebody is going to school, somebody is going to office, somebody is traveling, commuting to work or school, है ना? तो वैसे ही सभी जगह पे आपको क्या देखने मिलता है? पथि पथि जन संचारः, नुपुररव झंकारः, विटपे खगकुलरवाः, चरितुम चलिता गावः. So यहाँ पे क्या observations है? Pathi Pathi, on each and every marga, on each and every road, there are janasanchara, movement of people. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. So everybody is, you can see the movement in each and every way. और उसमें से women भी है. Women are also going somewhere, either to sell vegetables or buy vegetables or buy milk or go to the office or go to the school, है ना? तो सभी जगह पे आपने सभी स्टाफ मेंबर्स में भी अभी वुमेन देख रहे हैं. तो वुमेन आर वेयरिंग जांजर, नुपुर, एंकलेट्स, करेक्ट? तो नुपुर एंकलेट्स का रव मीनिंग ध्वनि, झंकार इज एकोइंग एवरीवेयर. सो व्हेन वुमेन वॉक, कितनी अच्छी वो पायल की आवाज आती है. तो ये झंकार भी मॉर्निंग में सुनना अच्छा लगता है. विटपे मीनिंग वने. In the forest, there is another beauty. In the forest, there are less people but more birds. Khaga, bird. Kula, family. Ravaha is again sound. So in the forest, there is sound of the family of birds. Choo, 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 choo. So the whole forest is sounding beautiful. Charitum chalitaha gavaha. Here the visarg is loper, but it means gavaha. All the cows have begun walking towards the field for grazing. उन्हें भी भूख लगी है, तो वो भी घास चढ़ने फार्म में जा रहे हैं. हस्ते हस्ते पत्रम, वदने वदने स्तोत्रम, खेलति बालक वृंदम, गीतम गायम गायम. बच्चे क्या करते हैं? अगर उनका स्कूल का टाइम है तो स्कूल में वो क्या करते हैं? इन ईच एंड एवरी हैंड, हंसते हंसते, इन ईच एंड एवरी हैंड देयर इज पत्रम, देयर इज सम पेज, सम बुक. वदने वदने स्तोत्र में दे आर चैंटिंग स्तोत्र. वाओ, मॉर्निंग में स्तोत्र चैंटिंग. ईच एंड एवरी माउथ इज हैविंग स्तोत्र. सो स्तोत्र चैंटिंग इज गोइंग ऑन. बालक वृंदम, जस्ट लाइक लतिका वृंदम, कलिका वृंदम जो अभी अभी आया. Similarly, Balak Vrindam is a group of students, group of children. They are kridati, khelati, playing. खेल तो रहे हैं लेकिन गा गा के. गीतम गायम गायम, गीत गाते गाते खेल रहे हैं. While singing the song, the group of children are playing. So this was our Prabhat Varnanam. What happened, how happened, what is going on around us. Now let's do the Abhyasa Karyam. Pronounce the following words correctly. Chandraha, Chandraha, moon. Prakashaha, Prakashaha, light. Vrindam and not Vrindam. Vrindam, a group.
Latika vrindam, Latika vrindam, a group or a bunch of creepers, just like one ear hanging. Nidra, Nidra, Tantra, Tantra. Nidra is sleep and Tantra is fatigue, tiredness. Both are bhagna, broken. Bhagna, Bhagna, Lagna, Lagna, involved in. Ullasaha, Ullasaha, enthusiasm. Hasaha, Hasaha, smile. Janasancharaha, Janasancharaha, movement of people. Jhankaraha, Jhankaraha, the sound of anklets. Very easy, multiple choice questions are given. Suryodayaha kada bhavati, when sunrise happens. Sayankale, in the evening. Prabhate, in the morning. Or madhyane, in the afternoon. So everyone knows Suryodayaha prabhate bhavati, in the morning and not in sandhya kal or madhyana. Suryodayasya anantaram janaha kim kurvanti? After the sunrise, what do people do? Suryodayasya anantaram janaha karmani lagnaha bhavanti. They get involved in their own work. Or vartalapa magnaha bhavanti. They gossip. Or nidra magnaha bhavanti. Yes, they do gossip, but in afternoons. Nidra at night. But in the morning, karmani lagnaha is the correct option. Prabhata kale vadane vadane kim asti. What can we see at everyone's face? Chinta, rudanam or hasaha? Hasaha. We are not worried. We don't cry in the morning. हाँ, स्कूल नहीं जाना है, बहुत ठंड है, तो आप रुदनम कर सकते हैं, but not everyone does that. So, हासह, smile, जो majority में दिखती है वो. बालक वृंदम प्रभात काले किम करोति? What are the group of children doing in the morning? खेलति, play, शयनम करोति, sleep, or पूजाम करोति. So here, according to our poem, Prabhata Kale Balakavindam Khelati, they are playing. Pujam Karoti, when you go to the school, you do the morning assembly prayer, prarthana, or there are your parents, your grandparents, वो सब पूजा daily करते हैं. But I don't know about you. So, according to the poem, it is Khelati. Mandam Chalati Samiraha was in the first stanza. Samiraha means Vayu. The wind is going slowly. So if Mandam is for slowly, there is one word for fast. And that is Shigram. So according to this sentence, what we will write? Shigram, Ashvaha and Shashakaha. So we can write Shigram chalati ashvaha or Shigram dhavati ashvaha or Ashvaha Shigram dhavati, any of the jumbled thing. Similarly, Shashakaha Shigram chalati or dhavati. And Gajaha and Mahishaha are going slowly, not as fast as others, slowly. So here I will write Mandam. Gajaha Mandam chalati. Mahishaha Mandam chalati. Okay? Viloma padam chinuta. Find the opposite word, antonyms. If Mandam is slow, what is the word for fast? Shigram. So Mandam opposite is Shigram. This is slow. Shigram is fast. Udayaha to rise. So Astaha to set. Suryodayaha Suryastaha. Sunrise, sunset. Sadhiraha, having so much of patience. Adhiraha, to become chanchal, impatient. This sa is with, is without, without. Nidra, to sleep. To wake up is jagaranam.
sleep and wake up. Nidra Jagaranam. Similarly, let's find out the synonyms. Samanarthi Shabda Paryayvachi. Samiraha. Mandam Chalati Samiraha. Samiraha means Anilaha. Wind. Both words are new to you, but it means wind. Vayuhu. Suryaha. Because of Surya, Divas, Din happens. That's why Surya is called Divakaraha or Dinakaraha. Diva means day. Day karne wala. Madhupaha. What is Madhupaha? Honeybee. Madhu pibati. He drinks the madhu. That's why another name is Bhramaraha. Bhramati iti Bhramara. यहाँ वहाँ घूमता है इसीलिए Bhramaraha for bee. Chandraha is also called Sudhakaraha because Sudha means Amrit, nectar, nectar करने वाला. Now, अमृत कैसे करता है? तो जैसे चंद्र है, वो सभी औषधि में वो पोषण तत्व देता है. And that medicinal properties in the plants are coming from the rays of the moon. That's why another name for Chandra is Sudhakaraha. अमृत करने वाला. Last is simple. Gavaha, Dhenavaha for cows. Next we learn Vrinda means Samuha. हमारे ही इस प्रभात वर्णन में there were Kalika Vrindam, Latika Vrindam, Balaka Vrindam. Similarly, सखी का ग्रुप है friends, तो सखी वृंदम. और मित्र का है, डिफरेंस बिटवीन सखी एंड मित्र इज ऑल गर्ल्स है, तो सखी बोलेंगे. जैसे राधा की सखियां है और मित्र में सभी बॉयज है. आप अगर बॉयज गर्ल्स दोनों है सो यू विल से मित्र वृंद, बट ओनली गर्ल्स सखी, ओनली बॉयज मित्र. सखी वृंद, मित्र, मित्र वृंद. गायक, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायक वृंदम. वादक यानी तबला, हारमोनियम, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, वादक वृंदम, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. गोप वृंदम, सभी ग्वाले का एक ग्रुप है, सभी बच्चों का एक ग्रुप है. बाल वृंदम. सो वृंदम शब्द किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं टू से समूह विथ. आई होप यू गॉट द जिस्ट. मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. धन्यवादः. पुनर्मिलामः. Do some Paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः.